Welcome back. The deadline for using old 500 rupee note at petrol pumps and buying airline tickets at airport has been cut short to tomorrow from the 15th of this month, announced earlier. A government notification said old note will continue to be expected for the other utility bill payment as well as railway ticketing counters and counters of government or public sector undertaking buses and purchases of bus ticket till the 15th. Finance Minister Arun Jaitley has taken on AAP convener and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Kejriwal had questioned the government amendments in the Income Tax Act passed in the Lok Sabha on Tuesday over their intent. The Finance Minister took to the social media not only to counter Kejriwal but to also put out facts in the public domain. The Hazarmila Seva Trust has donated land worth crores to Yoga Guru Baba Ramdev to set up a Yoga cum Ayurveda center in Nepal's Birgunj. Ramdev, who arrived in Kathmandu on a week-long visit, inaugurated a Patanjali Ayurveda product manufacturing unit in Bara in southern Nepal. The manufacturing unit, which will produce various Patanjali Ayurveda products, was established by noted Nepali businessman Upendra Mathau. In Himachal Pradesh, a 3.3 magnitude earthquake struck Rampur town of Shimla district and Ani town of Kulu district early this morning. The center of quake was measured somewhere in Kulu district, about 10 kilometers deep. The area falls under the sensitive zone category 5 of the earthquake. Vidhan Sabha President Govind Singh Kunjwal accused the centre government on demonetization. He also said that one side public is waiting in the queue for withdrawing the money for their basic need, but on the other side some are doing expenditures in weddings beyond 5 crore rupees. Nevertheless, he also make a joke on the statement of BJP's members for showing the bank details as it is just for making people fool. अब मैं समझता हूँ नोटबंदी के बाद नंबर 1 का नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ जो आपके शाजी भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपने विधायकों से खाते की नकल मंगा रहे हैं। अगर उनको नकल मंगानी है तो पहले से नकल मंगाएं। जब से नोटबंदी हुई तब से नकल मंगा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो उससे कोई स्पष्ट साफ। Mission 2017 campaign of BJP is kickstart in pole-bound state Uttarakhand as on 4th of December. BJP Parivartan Yatra will be held in Haridwar. All the preparation will be done by the BJP workers as Mayor Manoj Garg flagged off the preparation campaign for Chandrachar Chowk. BJP Parivartan Yatra reached Haridwar on 4th of December. Mayor Manoj Garg flagged off the Rath campaign. निश्चित रूप से जनता अपना स्पष्ट कर चुकी है। उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 के चुनाव में आने वाली है। हमारे जितने भी विधायक जिनको टिकट दिया जाएगा पार्टी के स्तर से, वो 45 से अधिक संख्या में जीतने वाले हैं। और निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार और अराजकता और जो एक डर का माहौल जनता के अंदर इसने पैदा किया कांग्रेस ने। In Haldwani, Labour Department organizes a program in which Cabinet Minister Indra Hirdesh and Harsh Durgapal is present. On the occasion, free toolkit is distributed to the labourers. More than 3,000 people took benefit from the program, whereas Labour Minister said in the schemes more than 1,68,000 people will enjoy the benefit of the Labour Department.
ये श्रम मंत्री बने हैं तब से भारत सरकार की इस योजना को लागू करने में इन्होंने रात दिन एक कर दिया। पहाड़ के कोने से लेके और तराई के गरीब मजदूरों को सबको इन्होंने दिया है, जिसमें किट भी है, साइकिल भी है और मशीनें भी हैं और सब अच्छी क्वालिटी के हैं हमेशा। तो इस प्रकार ये लाभ हुआ, शादी का पैसा और बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। तो उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जो पिछली सरकार ने यहाँ लागू नहीं की और लागू की केवल एक व्यक्ति को लाभ दिया, तो आज उत्तराखंड सरकार द्वारा, श्रम विभाग द्वारा 1,67,000 श्रमिकों का पंजीकरण कर दिया गया है, जिसमें 67,000 श्रमिकों को जो अनुमन्य सुविधाएं हैं, जैसे टूल किट है, मशीन है और साइकिल है, विवाह के लिए पैसा है, छात्रवृत्ति पैसा है, प्रसूति के लिए पैसा है। Congress party rally is going to start in Kashipur and the preparation has started as on 7 December. The Congress party Sankalp Yatra is going to reach Kashipur with the state CM Harish Rawat along with his party members. Moreover, the Sankalp Yatra will be started from the Udayraj Hindu Inter College and all the programs will be done there. हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी काशीपुर एक बहुत बड़ी विशाल रैली को और सतत संकल्प जो यात्रा चल रही है उसके तहत भी काशीपुर 7 तारीख को पधारने जा रहे हैं। पूरा का पूरा कांग्रेस परिवार उनके आगमन के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित है। हम सभी लोग रैली के लिए बहुत उत्साहित हैं और ब्लॉक स्तर पर महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सारे प्रकोष्ठ, हमारे सारे प्रदेश के पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी। On the occasion of World AIDS Day, different health department and school organizes a rally across the block in Gopeshwar. Afterward, an awareness campaign is also organized for the public, in which experts give knowledge on HIV/AIDS and tell about its precautions. विदित है कि 1 दिसंबर को हम लोग विश्व दिवस पे रैली और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और आज इस गोपेश्वर में हम लोगों ने GIC, GGIC और पीस पब्लिक स्कूल के बच्चों के माध्यम से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके पश्चात जिला चिकित्सालय गोपेश्वर Corbett Place, Ramnagar nowadays in a bad phase as the local transportation, that is roadways buses, is not working properly. While asked the bus authorities, they said they have till now 61 buses, but due to lack of workers, they are not be able to work it in proper conditions, due to which they are also suffering a loss. वर्तमान में डिपो में 61 बसें हैं और जो यहाँ पर चालक परिचालकों के अभाव के कारण इनका 100% संचालन नहीं हो पा रहा है। हमने अपनी तरफ से मांग पत्र भेजा है उच्चाधिकारियों को और जैसे ही हमारे पास चालक परिचालकों की उपलब्धता होती है तो हम इन गाड़ियों का संचालन करेंगे। या हमने कुछ नए रूटों के भी परमिट और आवेदन करवा रखे हैं डिपो स्तर से और जिन जैसे हमें रूट का स्वीकृति प्राप्त होती है आवेदन परमिटों के संबंध में तो हम In Ramlila ground of Lohaghat government camp is organized in which the authority along with company LM are given the facilities of the Aadhaar card, and while asked the social worker, he said that this move is for the beneficiaries, for the people. Health checkup of the people is also done in the camp. भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत एलएमको कंपनी कानपुर के सहयोग से और ये दिव्यांगों को कृत्रिम अंग दिए जाने के लिए ये परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पर जो जिनके आधार कार्ड नहीं बन पाए उनके आधार कार्ड बनने हैं, जिनका विकलांगों को After suffering from drug allergy, remaining indoors for more than a month, DMK chief M. Karunidhi was hospitalized today here in China. He admitted at Kaveri Hospital in Alwarpur just before 6 a.m. in the morning as he was suffering from
Optimism of nutrition and hydration, the 92-year-old former Tamil Nadu Chief Minister has not been keeping well for the last few weeks. The hospital stated that condition of 92-years-old leader is stable and was advised to stay in hospital for a few days. President Donald Trump showered Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif with praise during a phone call on Wednesday, providing a glimpse into his diplomatic strategy. On his phone call, he said, "You are a terrific guy. You are doing amazing work, which is visible in every way. I am ready and willing to play any role that you want me to play to address and find solutions to the outstanding problems." At last, he said, "Please convey to the Pakistani people that they are amazing and all Pakistani I have known are exceptional people." Mukesh Rawal, a small screen actor best known for his role in TV show Ramayan, was found dead in Mumbai. According to media reports, the actor body was found near railway track in the Kandivali area of Mumbai. Apparently, he was killed in the train accident while on his way to dubbing sessions for a Gujarati film. 66-year-old Rawal was run over by a train while crossing railway tracks. Currently, he was doing the Gujarati TV serial Nas Nas Mein Khunnas. Rawal was also a popular theatre artist. That's all in this English bulletin. For more updates, keep watching HNN 24/7.